जी एक सेकेंड हम्म। जी सर, मुझे पूछना था कि जब हम लोग जैसे कि लिटरेचर अभी रिव्यू कर रहे हैं डिजीज का, ठीक है, तो अब जैसे मैं रेफरेंस देना है, ठीक है, तो मैं प्राइमरी रेफरेंस कोट करूंगी या सेकेंडरी रेफरेंस कोट करूंगी? बिकॉज जो प्राइमरी रेफरेंस है वो आपका 1930s का है, और जो अभी जो नया पेपर है वो अभी 2021 में पब्लिश हुआ है। सो व्हाट पेपर शुड आई कोट? 19 सॉरी, अगर तो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव है तो फिर आप 1931 का भी दे सकते हैं। हेलो। लेकिन अगर अगर हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव है तो फिर आप ओल्ड रेफरेंस भी दे सकते हैं, ओरिजिनल रेफरेंस भी दे सकते हैं, लेकिन अगर कोई जनरल चीज है तो उसके लिए आपको लेटेस्ट रेफरेंस देना चाहिए। ओके, Generally, राइट, मुझे ये एक चीज आपसे पूछनी थी। सही। और सर मुझे ये पूछना था कि अप्रोक्सीमेटली हाउ मेनी पेपर्स रिव्यू आर्टिकल should I read in order to write about the task? सिंपल, पहले ही मैंने ये कहा था कि आप एक या दो रिव्यू पेपर कंप्लीट पढ़ें। जब आप वो पढ़ लें तो फिर मेरे साथ मुझसे शेयर करें और मेरे साथ डिस्कस करें, ताकि मैं फिर उसके बारे में आपको बता सकूं। So counting does not matter. ठीक। Counting does not matter. Content matters, and understanding of the content matters. So, for example, if you are able to finish 2, 3 papers from start, like you are able to finish them and you understand them, then that's very good. But then after that, we just need to study the relevant portions of the papers, not all papers. So we will just study or read some separate particular sections of the paper that are relevant to our topic. Right, I get it. सही। Thank you so much, sir. Any other question? सर ये क्वेश्चंस थे दो, जो actually like they are the short questions, but they were really bothering me, you know. I will suggest you whenever you have, for example, want to talk. So the best option is just try to learn to draft an email. So I usually respond to emails within 24 hours, maximum 48 Like, hours. So I mean, sometimes we feel like, okay, this person is available, then I will be able to ask the question. So, but it is just a right, problem for us, you just have to write whatever it comes in your mind, write in email, send that. That's it. right, sir. Fahad is here. Fahad is also here. That is wonderful. Right, Uh, sir. hmm, uh, so, और कोई सवाल है तो पूछो। मतलब आप इस चीज को बुरा ना मनाना। क्या नाम है, क्या नाम है आपका, फायजा। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि क्वेश्चन लिखना लिखना कोशिश करो, कि ईमेल किया करो। You make sense? Does this make sense? सही है, I get it. No. Yeah, it obviously makes sense. It is awesome. Actually, मैं ये चाहती थी कि हम लोग अगर एक वजह ये होती है कि नॉर्मली वीकडेज के अंदर मेरा स्केड्यूल काफी टाइट होता है और मैं उस I तरीके understand. से क्या नाम है रिस्पॉन्ड नहीं कर पाता हूँ। कभी कभी ऐसा होता है कि मैं अवेलेबल होता हूँ, लेकिन कभी ऐसा होता है कि मैं अवेलेबल नहीं भी होता। तो उसका बेस्ट वे ये है कि अगर आप मुझे ईमेल कर दो तो मैं सही। 5 मिनट हूँ, चाय पी रहा हूँ तो मैं ईमेल देख लेता हूँ और फिर उसका क्या कहते हैं जवाब भी दे देता हूँ, क्योंकि मुझे ईमेल लिखने और पढ़ने में ज्यादा मुश्किल नहीं होती। Does it make sense? अगर आप मुझे मंडे को कोई टाइम दे दें, so I can share with you, No, the data of 3 articles which I have उसका compiled. उसका भी मैंने सोल्यूशन दे दिया हुआ। देयर इज नो नीड फॉर मीटिंग, देयर इज जस्ट नीड फॉर सेंडिंग द ईमेल। Okay, sir. Just send me the email, and after that, if I feel like I have to talk to you, I will send you the invitation to connect. Okay, done. Does it make sense? ठीक है, Although these things may sound weird to समझ you, गए। मतलब आपको ये चीजें शायद हो सकता है कि वियर्ड लगें, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब आप ये चीजें की आदत डाल लोगे तो फिर आपको ये वियर्ड लगना नहीं रहेगी, क्योंकि
फ्रेंकली स्पीकिंग, हम लोग यहाँ पर जितना भी कम्युनिकेशन करते हैं, मतलब आई रेयरली मीट माय सुपरवाइजर, मतलब वंस इन अ वाइल, मे बी 1 महीने के बाद कभी मुलाकात हो जाती है। सारा काम जो हो रहा था वो Right, ईमेल पे हो रहा right, sir. I get it. होता। Thank you so much, sir. No problem, no problem, don't mind it, please. No, 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 sir. Thank you so much for mentoring so well. Thank you. No, I mean, sometimes I may sound harsh or rude, but this is how it is, you know. In here, we work like that, you know. There is nothing else like. I mean, हमें लगता है ना, मतलब we feel like okay, I should have this person right available in front of me, but most of the problems, like 90% of the problems, can easily be solved by writing an email. Right, I get And it. it has dual advantage. You will learn how to communicate. Secondly, आपकी आदत बन जाएगी ईमेल लिखने की, और वो आपको बहुत हेल्प करेगी अमेरिका में आते हुए। मैंने पाकिस्तान में शायद इतनी ईमेल्स नहीं की होगी, यहाँ पर डेली की बेसिस पे मैं कम से कम 10 से 15 ईमेल्स सुनता देखता हूँ, यानी कि रिसीव करता हूँ, 10 से 15 ईमेल्स का जवाब भी देता Yes. See? हूँ। ओके, फाइन। सो आपका, जब मैंने जैसे लास्ट टाइम हमारी मीटिंग हुई थी तो मैंने बोला था कि अगर आपको 2 दिन में काम कंप्लीट कर लेते हैं, 3 दिन में काम कंप्लीट कर लेते हैं, आपने सिर्फ 3 फाइलें इकट्ठी करनी है और मुझे भेज देनी है, मैं उसको रिव्यू करूंगा और उस पर कमेंट्स करूंगा और कमेंट्स करके वापस भेजूंगा, और उस दौरान आपकी लर्निंग होगी। जी सर, एक्चुअली प्रॉब्लम मुझे आ रहा था रेफरेंसिंग में, क्योंकि जब मैंने अपना जैसे थीसिस पब्लिश किया था ना, तब मुझे कहा गया था कि हमें 2010 से ऑनवर्ड्स रेफरेंसेस देने हैं, और 2010 से पहले वाले सारे के सारे रेफरेंसेस ऑब्सोलीट हो जाते हैं। लेकिन अभी जो मैंने बहुत ही रीसेंट आर्टिकल पढ़ा ना, वो डलहौसी यूनिवर्सिटी कनाडा का आर्टिकल था, और उस आर्टिकल में उन्होंने 1930s 1920s यूं करके रेफरेंसेस दिए हुए थे। सो आई गॉट रियली कंफ्यूज कि एक्चुअली करना क्या है। अगर तो फॉर एग्जांपल मैं बात कर रहा हूँ कि कैंसर थेरेपी के ऊपर बात करना चाह रहा हूँ, और मैं ये कह रहा हूँ कि फर्स्ट टाइम द ड्रग वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय दिस एंड दिस, राइट, तो मैं उसका 1930 का रेफरेंस भी डाल सकता हूँ, अगर मैं हिस्ट्री बयान कर रहा हूँ, अगर मैं हिस्ट्री लिख रहा हूँ, ठीक है। लेकिन अगर मैं जनरल इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ, जनरल इंफॉर्मेशन मतलब मैं मिसाल के तौर पर दवाइयाँ जो कि इस्तेमाल हो रही हैं अल्जाइमर डिजीज के अंदर, उनके बारे में बात कर रहा हूँ, तो फिर मैं लेटेस्ट रेफरेंस दूंगा, ठीक है। तो जब हमें जी तारीख के अंदर जाना पड़ता है, तो तारीख में हम उस बंदे को रिलायबल मानते हैं। मिसाल के तौर पर अगर मैं एवोल्यूशन के ऊपर बात कर रहा हूँ, तो मैं डार्विन की किताब कोट करूंगा जो उसने 1836 में लिखी, राइट, या शायद 1830s में लिखी, आई एम नॉट श्योर ऑफ द डेट एग्जैक्टली। तो that will give the weightage, that will give okay, this person actually read that history, so it does not matter. But those historical references are not too much, they are like maximum 4 or 5 references that talk about history. But then the latest work, like the latest research that is going on, like the drugs that are in market and that are under investigation, that is our topic. राइट। Okay, and for that you थैंक need यू सो मच। latest reference like maybe 2021, 2020, 2018, 2019, that's what. And I told you to investigate the clinical trials website, and you have to, in that, if you use that website, you will have to create your own references. You will not find those references in the NO. Make sense? यस, थैंक Okay, good. Fahad, thank you so much for joining. You have, how are you doing? अल्हम्दुलिल्लाह, I'm fine, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपने मुझे 2 पेपर भेजे थे और वो आप चाह रहे थे कि वो आपको समझ नहीं आए। जी जी, यही है, वो पेपर जो थे थोड़े से कंफ्यूजिंग थे। Let's see how they are confusing. First, we should go for this or this. आप जो है क्या कहते हैं, आपकी मर्जी, जो आपको बेहतर लगता ये स्टेम सेल रिसर्च का पेपर है, वो कहता है जनरेशन ऑफ जीन करेक्टेड आइसोजेनिक कंट्रोल सेल लाइन। है। बेसिकली इन्होंने क्या किया है कि एक सेल लाइन डेवलप की है फ्रॉम अल्जाइमर डिजीज पेशेंट, ठीक है, आईपीएससी लाइन कैरिंग अस A79V म्यूटेशन इन PSEN। अब इसको डेसिफर करने के लिए मुझे सबसे पहले PSEN का पता होना चाहिए, A79V का पता होना चाहिए। A79V से मुझे नजर आ रहा है वैलीन है 79th पोजीशन पे, और A शायद एडेनिन है, सो देयर इज समथिंग लाइक दैट, ओके।
जितना मुझे लगता है कि एलेनिन हैज रिप्लेस्ड वेलिन एट द 79 पोजीशन. Exactly, yeah. So alanine has replaced at 79 position with valine. और ये PSEN कोई जीन का नाम है, ठीक है, मे बी अभी मैंने कुछ नहीं पढ़ा है, अभी मैं जस्ट सेइंग यू, ओके. और IPSC लाइन है, पेशेंट्स IPSC लाइन. तो बुनियादी तौर पर दिस पेपर इज अबाउट डेवलपिंग अ सेल लाइन. दे हैव रिपोर्टेड अ सेल लाइन दे मेड, ओके. और डेनमार्क में ये पेपर छपा है. और अब हम देखते हैं ये तो वही बात है, वही प्रीवियसली जनरेटेड उन्होंने पहले एक जनरेट की हुई है सेल लाइन जिसका नाम उन्होंने लिखा हुआ है एन इंड्यूस्ड प्लोरीपोटेंट स्टेम सेल लाइन, ठीक है. IPSC उन्होंने पहले एक की थी जिसके अंदर एक क्या कहते हैं म्यूटेशन थी in PSEN1 as an in vitro disease model. Here we generated a gene corrected version from this HIPSC line by substituting the point mutation with the wild type sequence. The reported A79GC IPSC line is very useful resource in combination with this line in order to study pathological cellular phenotypes related to this particular mutation. So, I mean, I don't want to study this paper. Why? Because if I am working on cell lines, and if I have to discuss the cell lines that are being used for the Alzheimer's disease patients, or I am talking about the models that are being used for Alzheimer's disease patients, then this will be topic of my interest. ठीक है. Right. So otherwise, I will not dig deep into it. So basically, what actually I learned from this paper so far is that it is a lab resource paper. First, second thing, lab resource paper. So basically, they actually must have discussed how they developed that cell line, how they might have, and then if you see that, so this is the mutated sequence, okay, and these sequences are readily available on PubMed, right? PubMed bioinformatics section. If you go to the NCBI से मिल जाते हैं, जी. bioinformatics section of the PubMed, then you can easily find it. So basically, this is what it is. And if you want to generate some cell lines, then you can. And then they grew these cell lines and saw like how they look like, and that's 4-page. This is like kind of a protocol type paper where you actually are telling how did we make the stem cell. The next big question is very early onset sporadic Alzheimer's disease with a de novo mutation in PSEN1 gene. So basically, I can understand from this that PSEN1 gene is very much important for the pathogenesis of Alzheimer's disease. जी, ऐसे ही है. So if PSEN1 gene, if we could silence PSEN1 gene, we could know. Basically, what from this line, I understand that. So de novo means they did it for the first time, and they caused the mutation in PSEN1 gene. And once they caused the mutation in PSEN1 genes, there was Alzheimer's disease, right? So that is. जितना मैंने पढ़ा था मुझे लगता है कि they didn't cause this क्योंकि ये केस रिपोर्ट है. I think they observed कि एक de novo mutation हुई है. Maybe I didn't study this paper. I just what I infer from this paper is that PSEN1 gene is important for जी. not having the Alzheimer's disease. Got it? तो अब पढ़ लेते हैं. ये रिपोर्ट है 22-year-old man diagnosed with rapidly progressing early onset with prominent extrapyramidal symptoms initiating this, presenting 39G mutation in presenilin-1 gene. So this name is presenilin-1 gene. Unaffected parents of the probe and are not carriers of the mutation but have histories of extrapyramidal disease. This is the origin of this. An oval variation minus the number of PSN mutated possible for each disease. So that's okay. So why do you need to quote this paper somewhere? जितना मुझे लगता है कि हम इसमें से इतना ये बता सकते हैं कि जो PSEN1 जीन है इसमें क्या कहते हैं वेरियस म्यूटेशंस होती हैं जिसकी वजह से आपके पास अर्ली ऑनसेट अल्जाइमर्स डिजीज हो सकता है. आप चाहते हो तो
आप चाहते हो तो आप उन म्यूटेशंस के बारे में थोड़ी एक्सप्लेनेशन दे दो, जैसे मैंने अपनी जितनी कंटेंट The important thing that I can get from this is that if वो मैंने दी है. if we could, we have to dig out. I mean, this is a very interesting idea. So if we could check whether this PSEN1 gene is present in mouse or not, right? Monkeys or chimpanzees, uh, in mice, right? So, oh yeah. So basically, then we can actually make a model for the Alzheimer's disease, जी जी right? ऐसे ही है. This information is very much helpful in because for all the mental illnesses, the problem is having the model, animal model, right? So we rarely find the exact models for the mental illnesses, right? We can easily find the model for cardiomegaly or hepatic failure or like pulmonary problems or like physical abnormalities. We can easily make those models or cancer models. But like the brain things, for example, Parkinson's model is very difficult to make. Then is like the Alzheimer's model. That's I mean, then autism disease. How can we check from the animal that this animal is suffering from autism or from Parkinsonism or from Alzheimer's disease? So we have to somehow mimic those things. So if we could know that PSE and one gene is doing that, then we will have to observe what type of symptoms are being observed in the mice uh, after we could mutate that gene in the mice or silence जी that. जी हाँ जी. अलोंग साइड दैट देखें, अभी ये तो मेन जीन्स है ना, क्योंकि आपने मुझे दो टॉपिक्स दिए थे ना. एक तो ये था कि आई नीड टू फाइंड आउट द जीन्स दैट आर इम्प्लिकेटेड इन अल्जाइमर डिजीज, राइट? This is एंड देन आई हैव टू. that's wonderful thing, I mean, discovering this thing is very good. Uh, yeah, जी सर. yeah, keep it up. उसमें उसमें भी मैं इस तरह कर रहा हूँ कि इफ आई फाइंड अ पर्टिकुलर जीन विच इज इम्प्लिकेटेड, तो देन आई फाइंड अ फ्यू पेपर्स जिसमें क्या कहते हैं कुछ जीन्स की स्पेसिफिक म्यूटेशंस के बारे में बताया हुआ है ना, सो दैट आई कुड गिव अ ब्रीफ एक्सप्लेनेशन अबाउट दैट. वरना इस तरह तो फिर क्या होगा कि 3 लाइंस के अंदर मैं बता दूंगा ये 4 जीन्स हैं, ये इम्प्लिकेटेड है और बस. तो No. ये So ये मैं नहीं करना चाहता. that's interesting. So once you write one line, then you have to cite that paper, and we can. I mean, once you get the draft ready and send it to me, then I will discuss with you, and I will make it good for you. You will learn something. Once you. I mean, I'm just जी waiting जी. for your drafts to come into my laptop. अभी मैंने आपको भेजा है ना अपना ड्राफ्ट, तो आप उसको काइंडली रिव्यू करके भेज देना, क्योंकि मतलब कि व्हेन आई सेंट यू द Oh, फाइल उसमें मैंने. I thought this is just the two papers because नहीं नहीं, उसके अंदर मैंने अपना वर्ड डॉक्यूमेंट भेजा हुआ है. oh, I got it. No, now I just got it. So I was just thinking that you are worried about those two papers, but now, I mean, yeah, okay. I mean, I will check it. And did you copy that in the group? Let me see. Yeah. हाँ. So हाँ so जी, वो सारा मैंने भेजा हुआ है. uh, so basically, I mean, I have sent two PDFs of the two articles. So add their content. So that is why I just read your text and thought like, okay, you just need help with the papers. I was not aware that you actually sent the draft. I've actually sent a draft to you. If possible, you could check it. Okay, No, then I have I'm to. going to check it right now. Don't worry. ठीक है I'm ठीक. just going to check it now. Yeah, All right. I'm going to check it now. Let me see that. Okay. How else? How is everything going on with you? बस अल्लाह का शुक्र है, ठीक है. Actually, I've found alongside genes that are implicated, I've also found some epigenetic factors as well, मतलब such as circular RNAs and microRNAs, तो मैं उनके बारे में भी थोड़ा लिखूंगा. Okay. तो अभी क्या कहते हैं, I'm just waiting कि आप बता दें कि थोड़ी सी उसमें क्या क्या changes होनी चाहिए so that I Okay. can You have pretty much incorporate them. these four references. Fine. नीचे भी होंगे references. Oh, you have 10 references. Fine. That's good. Okay. Any question? Any trouble did you find in uh, I mean, drafting the references or adding the references through EndNote? नहीं नहीं, कोई मसला नहीं हुआ.
Okay. Okay. So yeah, let me finish this. I will make I will track changes and I will send it to you back today. ठीक हो गया, ठीक हो गया. अच्छा, one thing that I want you to do, if it's possible, कि the genes that are ApoE and PSEN2, I haven't found a lot of content regarding that. मतलब कि आपने कहा था ना कि इम्पैक्ट फैक्टर भी इम्पोर्टेंट होता है, तो जितने भी मैंने इनके बारे में इम्पैक्ट फैक्टर पेपर्स फाइंड किए हैं, दे आर उनका इम्पैक्ट फैक्टर 2 होगा या मे बी 3 होगा, तो इसलिए मैं कह रहा था कि अगर आप इसमें थोड़ा सा देख. Let me see. टेलर एंड फ्रांसिस में छपा हुआ है ये पेपर एमएलआई 2020. So a novel class of compound represented by Allen Pease encapsulated our formulation of anomalous pressure to target disease, notably the liver, and the synthesis of Allen Pease leads to be mediated by ApoE. In vivo dendritic only for the treatment of hypercholesterolemia. Why? What this ApoE is for? Oh, that ApoE is doing something different. ApoE siRNA Alzheimer's. क्योंकि एपोई में बहुत ज्यादा आ जाता है ना, तो इसलिए मैं कह रहा था. Let me search that. Let me search that, and I will work on it. Yeah. ये 2020 का पेपर है, 2021 का पेपर है. Modulating ApoE with tissue-specific siRNAs in Alzheimer's disease. RNA Therapeutic Institute कहाँ छपा ये? Oh, this is thesis something? Yeah, this is thesis. ये thesis लग रहा है कि. Yeah, this is thesis. Which university? University of Massachusetts Medical School. That should be interesting. That should be interesting to see. Yeah, that should be interesting to see. I'm sending you it in the in the group. Okay. Okay. Any other question? So I will certainly look into it and I will make my comments and I will send you back. Okay. Any question? नहीं है. I just wanted कि साथ में आप अपने कमेंट्स के साथ आप मुझे ये भी बता दिएगा कि वेदर जो मैंने अभी तक कंटेंट लिखा है, does that satisfy what are you looking for me to write? From the initial look, this seems very good to me, but there are a few things that I will definitely write those. ठीक होगा. No problem. कोई मसला नहीं. Because what I am looking for a table out of this. वो अभी टेबल बनेगा, because there is still a lot for me to look for. अभी मैंने आपको ये डिस्कस करना है, PSEN2 डिस्कस करना है, तो ये जब सारा डिस्कस होगा फिर फाइनल एक टेबल बनेगा, because this is just initial precursor. Yeah, अभी सिर्फ 2 ये. I'm happy with this work so far because it's going to be we are going to spend like 3 months over it. So at the end of the day, you will have a lot of. That is what actually I'm looking for. Here actually work starts. And the next time you send me the email, just to say me, just rather than saying that, just say that please find an attachment, my first draft or my second draft, right? So I misunderstood your email basically. I thought you just sent your 2 PDFs and I didn't look into it. Yeah. All right. Because I was thinking that okay, next time we will meet, I will discuss with that. Yeah, and you could understand, like, see how did I actually tackle those papers. And I get it. Yeah. Yes. Okay, then I'm stopping the recording. I think no one wants to come in, so let's not waste the time and let me review your draft and I will send it to you positively by tomorrow. ठीक हो गया, कोई मसला नहीं. All right, take care. Bye. Bye.